Public representatives, they are elected by you, for you. But sometimes the netas get so high on power, they end up mocking the very mandate given to them. And that was the case in Haryana. Chief Minister Manohar Lal Khattar was addressing a gathering in his state. And it was during that particular event where a woman was given a chance to speak and she made a request to the Chief Minister. Her demand was that every voter asks for, which essentially is for jobs. So she urges upon the Chief Minister and requests him to please set up a factory so that everyone can get employed. But the response which came from the Chief Minister was shameful and sickening, to say the least. Manohar Lal Khattar replied saying, "Next we send you in the Chandrayaan 4 spacecraft to the moon and sit down." Aam Aadmi Party has come down hard on the Haryana Chief Minister, saying that this shows the true face of the BJP. सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोलघाटन में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसमें भेजेंगे। बैठ जाओ। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोलघाटन में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसमें भेजेंगे। बैठ जाओ। My colleague Gurpreet is joining me live right now to get us more details. Gurpreet, what was the rationale behind the Chief Minister's conduct? Has there been any clarification, any word from the Chief Minister's office? Because this is a bizarre statement and a response to a citizen asking for a factory to be set up so that the people of that particular district can be employed. It doesn't behove of a Chief Minister to make a statement and mock the woman for the request that she's made. Well, so far no clarification has come from Chief Minister office. At the same time, when we talk to the multiple BJP leaders, they are not in a position to give any response because they say they are not very familiar with the content and in what context the Chief Minister of Haryana, ML Khattar, has spoken on this issue. But the main thing we have seen, the opposition party, they have made it a big issue, a political issue in the state of Haryana. They are saying, the Congress leader, they are saying unemployment is the one of the major issue in the state of Haryana at this point of time. The way the Chief Minister has mocked the voter when she was talking about employment and generation of employment through a factory which she has been demanding before the Chief Minister to set up in that area so that there will be more employment in that area. That time such type of a bizarre statement which is given by the Chief Minister, that is not accepted at all, and the opposition says it seems that the Khattar government, the Haryana government, they are not very keen to uproot this unemployment in the state of Haryana. And as of now, we have seen the BJP leader, they are keeping at a distance for such questions, but at the same time, the opposition party, they are raising this issue. They are saying this is the real face of the BJP. They are saying unemployment is one of the major issue in the state of Haryana. And at this point of time, if the Chief Minister is giving such type of statement, that is unacceptable. So let's see that what type of clarification and what type of defense the BJP netas and the Chief Minister is going to say on this issue. But as of now, this issue has become one of the prominent political issue because this is related to the unemployment, and the way we have seen the voter, she has just demanded to set up a factory there so that the more employment should be generated in that area. Absolutely, Gurpreet, and this is a reasonable demand that this woman had made to the Chief Minister. But the manner in which she was shot down by the Chief Minister has really shocked the entire nation. Well, thank you, Gurpreet, for joining us with all those details. I'm also joined by the Congress's leader and spokesperson, Mr. Kuldeep Sharma, right now. Mr. Sharma, good evening. Thank you for joining us over here at Mirror Now. You did see what the Chief Minister of Haryana had to say in response to a request by a woman where she had requested him only to set up a factory so that people around that area can be employed and get a livelihood going for themselves. He says that next the Chandrayaan 4 moon mission is ever launched, he's going to put that woman in that Chardrayaan 4 and send her off to space. Should a chief minister respond to their voters in this manner, somebody who had put them
where they are sitting right now in a position of power? I think this shows the Haryana Chief Minister in a very poor light. It is totally unbecoming and unbehoving for a Chief Minister who's sitting on a constitutional post and responsible post to talk in this manner tauntingly to a woman, especially when they profess that they respect women. This shows how much respect they have for women. But the main issue which arises out of this is the unemployment. The unemployment in Haryana is at the top. Haryana tops the country in the unemployment ratio. You see, the Chief Minister, instead of talking to that woman respectfully, has talked to her tauntingly, which is totally unacceptable, and I strongly condemn the Chief Minister for his utterances, which are absolutely unacceptable to the society. Well, absolutely, Mr. Kuldeep Sharma. Thank you for taking your time and sharing your views over here with us at Mirror Now. I'm also joined by Rai Singh of the Congress Party joining us right now. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राय सिंह जी. आप किस हिसाब से देखते हैं ये जो पूरा रिएक्शन आया है चीफ मिनिस्टर का? क्या उनकी पद की गरिमा के बारे में चीफ मिनिस्टर सोच रहे थे जब वो इस तरह से बर्ताव करते हैं, इस तरह से वो एक रिस्पॉन्स देते हैं एक महिला को, उस वोटर को जिन्होंने उनको वोट देके चीफ मिनिस्टर बनाया है? जिस प्रकार अपने पद और गरिमा को बिल्कुल लांघते हुए शर्मसार होकर ये लोकतंत्र के अंदर एक महिला का अपमान किया है, ये उनकी आदत हो चुकी है. इससे पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर कहा था, जिस प्रकार एक खिलाड़ी महिला ने मंत्री पर आरोप लगाया था उनके साथ छेड़छाड़ का, उनके साथ मिसबिहेव का, तब भी इसी मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं लूंगा. ये महिलाओं के अपमान में लगातार शामिल हैं और लगातार इस प्रकार से घिनौनी हरकतें कर प्रदेश के लोगों का, यहाँ की जनता का सिर नीचा कर रहे हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रकार से गंभीरता से जी बिल्कुल. राय सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात सामने रखने के लिए. आई एम ऑल्सो ज्वाइंड बाय मिस्टर अजय गुलिया ऑफ द जेजेपी. मिस्टर गुलिया, गुड इवनिंग. आपके चीफ मिनिस्टर जिस हिसाब से, जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस हिसाब से एक महिला के सवाल का जवाब देते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से घमंड नजर आता है, या ये कह दे कि एक वोटर्स का मान सम्मान चीफ मिनिस्टर यहाँ पे करने से चूक गए, जिस हिसाब से वो महिला का मजाक उड़ाते हुए उनके सवाल का जवाब देते हैं. नहीं, देखिए, आपको इस तरह से समझना चाहिए कि हरियाणा में एक ह्यूमर का अलग लेवल है. आपने उनकी आधी बात सुनी, वी हैव जस्ट गॉन थ्रू द हाफ साइड ऑफ द कॉइन. हमें पूरी बात सुननी चाहिए थी. उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के बाद में कहा कि इस बारे में गौर किया जाएगा और जो फैक्ट्री की मांग की गई उसको पूरा करने की बात भी उन्होंने कही. हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा के लोग ह्यूमरस हैं, वो मजाक के लहजे में बात करते हैं. उन्होंने जब एक फैक्ट्री की बात करी तो मुख्यमंत्री महोदय ने ये जरूर कहा कि नेक्स्ट अगली बारी जब मौका मिलेगा तो आपको चंद्रयान पर भेज देंगे. लेकिन उसके बाद की स्टेटमेंट जो मुख्यमंत्री महोदय ने कही, पूरी स्टेटमेंट को दिखाना चाहिए. सिक्के के आधे पहलू को देख करके हमें रुक नहीं जाना चाहिए. बट गुलिया जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सारे ऐसे नेता हैं जो पब्लिक लाइफ में, पब्लिक के बीच में बैठे हैं और वो वहां पे इसी वार्तालाप के लिए बैठे हैं कि जहां पे आपके सवाल है उनका हम जवाब देंगे, जो आपकी मुश्किलें हैं उसका हम निवारण करेंगे, और वहीं पे चीफ मिनिस्टर जब इस तरह का बयान देते हैं तो मजाक से ज्यादा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंसल्ट या नीचा दिखाने की कोशिश की गई. आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, वो इस प्रकार की कोई बात नहीं करेंगे. लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ जननायक जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कि हम लोग महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं और महिलाओं का सम्मान किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए. अगर किसी महिला को उनके इस वक्तव्य से ठेस पहुंचा, देखिए, हम खेद प्रकट करते हैं, लेकिन एक चीज जरूर मैं मानता हूँ कि सिक्के के आधे पहलू को देख करके कभी निर्णय नहीं करना चाहिए. सिक्के के दोनों पहलुओं को देख करके निर्णय होना चाहिए. मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दी उसको आधा दिखाया गया, उसको पूरा दिखाया जाए, जिसके बाद में वो उस महिला को तसल्ली भी दे रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं. तो दोनों चीजों को देख करके कोई रिजल्ट, को निष्कर्ष निकलना चाहिए.
जी बिल्कुल, शुक्रिया अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात सामने रखने के लिए. My colleague Gurpreet still continues to be with us. Well, Gurpreet, you know what Mr. Ajay Gulia of the JGP was saying, that this is a half-baked story of sorts. If you could provide some clarity over here, was there a second part to this conversation where the Chief Minister has expressed regret or has spoken to the woman concerned and assured that yes, they are going to come up with factories and ensure that the issue of employment in Haryana is going to be taken care of? Well, that multiple programs had been held in Hisar, and this video, which has just been just got by Mirror now also, and especially we have seen the opposition party. They are tweeting this video. There is need to bring a clarity on this issue, where the state government has given any clarification on this issue, but so far no response has come from anybody from the office or from the government also on this issue, whether they had given any clarification or not. But yes, of course, what we can understand from this, what we have learned, there is an informal meeting which was also being carried out after the program by the Chief Minister of Haryana also, and it might be possible he has given some reply and answer to the queries of the voters who had come there. But in the public domain, what we can understand, this video clearly telling that how the Chief Minister had immediately reacted when the women voters, she had demanded for a factory to be set up for generation of employment, but instead of giving a straightforward answer on this thing, that the government is thinking and mulling over this unemployment which is growing on in the state of Haryana, he has given a bizarre statement on that. And after that, we have seen the political row has already been erupted, and all the political parties, opposition party, they are putting up a question mark over the statement which has been issued by the Chief Minister. So let's see that how the government is going to defend itself, and what type of clarification is coming from the Chief Minister office also, and whether there is any informal conversation related to this that they are supposed to tell, so that it should go into public domain, and it should show that how the government is serious about the unemployment in the state of Haryana. Because so many times we have seen the former Chief Minister Bhupinder Singh Hooda, he is talking about the unemployment. That is one of the major issue for the youth in the state, and we have seen so many times the counter claim from the Haryana Chief Minister also, that I will have to interject over there, but kindly stay with us, Gurpreet. I will come back to you. I'm also joined by Mr. Bhag Singh Damdama, who is a JJP spokesperson and a leader. भाग सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. यहाँ पे मिरर नाउ पे हम लोग ने भी थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे एक महिला है, एक पंचायत जैसी जगह पे बैठी है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खट्टर जी खुद वहाँ पे स्वयं बैठे हैं, और वो महिला उनसे इस बात का गुजारिश करती है, इस बात का रिक्वेस्ट करती है कि एक फैक्ट्री सेटअप कर दिया जाए ताकि वो सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं उनको एक आमदनी का जरिया बन जाए, एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाए. पर जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने उसको चुप करा दिया, ये कहते हुए कि आपको चंद्रयान 4 पे भेज देंगे, वो कहीं चीफ मिनिस्टर के पद को शोभा नहीं देता. दमदमात जी, देखिए, जिस प्रकार का जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही, ये एक परिवेशिक स्थिति भी हो सकती है कि कई बार वो किस समय पे कहीं नहीं, लेकिन देंगे प्रदेश के मुखिया या मुख्यमंत्री के तौर पर इस प्रकार के जनसंवाद में कोई इस तरह की बात ना आए तो और ज्यादा बेहतर रहता है. लेकिन जिस प्रकार से रोजगार की बात की है, प्रदेश के अंदर योग्यता के हिसाब से ही रोजगार हर व्यक्ति को मिल रहा है. और जो सबसे बड़ी बात है, जो कौशल रोजगार जिनकी बात करते हैं हम, तो पहले है कि जो सबसे नीचे अंतिम व्यक्ति जिसको कहते हैं, कि उसके हिसाब से जिसकी फैमिली आईडी में बहुत कम इनकम है और वो योग्यता रखता है, उसको रोजगार देने की बात की. लेकिन रोजगार मांगना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से हर युवा का, हर महिला का, हर व्यक्ति का विचार है. बट भाग सिंह जी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर को अपने शब्दों का प्रयोग, या जिस हिसाब से वो उस महिला का सवाल का जवाब दे रहे थे, उसके बारे में उनको ज़्यादा सोचना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि एक महिला की अस्मिता को खेद पहुंचा हो. क्या इसके बारे में बोलेंगे कि पब्लिक लाइफ में जो रहते हैं वोटर्स के प्रति, क्या इस शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था, इस तरह से उसको चुप कराना चाहिए था? नहीं, देखिए, दो तरह की बात है. पब्लिकली बात में तो हमें हर शब्दों का चयन बड़ी सोच समझकर होता है और वो करना भी चाहिए. लेकिन मैं वही कहता हूँ कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें हो सकता है वो जनसंवाद खत्म हो गया हो, एक रूटीन की बात हो, उस समय कोई बात हुई हो,
लेकिन फिर भी इस तरह के शब्दों का चुनाव करते समय माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा पद है प्रदेश में कि रूटीन में चाहे कोई विधायक हो, चाहे मंत्री हो या सरकार में किसी भी पद पर बैठा कोई व्यक्ति हो, उन्हें भी इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। इस प्रकार के शब्द पब्लिकली नहीं होने चाहिए, लेकिन रूटीन में कहीं वैसे बैठे हम लोग तो कहीं शब्द इस प्रकार के हैं कि फॉर्मली आ जाते हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर इस प्रकार के शब्दों का यदि चयन ना हो तो वो हमारे लोकतंत्र के लिए भी बेहतर रहता है और जनता और सरकार के बीच में जो संबंध है उसमें मधुरता के लिए भी ये शब्द ठीक नहीं लगते जिस प्रकार से। बाकी जिस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है उसका स्पष्टीकरण तो माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादा अच्छी तरीके से दे सकते हैं। जी शुक्रिया भाग सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पे रखने के लिए। Clearly a large section of the alliance partners of the BJP from the JJP are maintaining that the chief minister did not mean to try and humiliate the woman concerned who had raised that particular question, demanding that the chief minister should set up a factory in that given district so that people can get employed in that area. But they maintain that there is a sense of humor with which the chief minister made that statement. However, what we are playing out on your screens right now says another story altogether, where the woman was shot down. Her answers, her questions that she had raised was shot down by the chief minister by saying that he's going to send her off in the next moon mission like Chandrayaan 4. सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोलघाटन में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना वो चंद्रयान 4 उसे भेजेंगे। बैठ जाओ।